8 types of people only introverts find straining according to psychology. The constant talker. Being in the company of someone who talks incessantly can be especially draining for introverts. ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, द कॉन्स्टेंट टॉकर, जैसे एक्सट्रोवर्ट्स जो जनरली बहुत सारे एनर्जी गैदर कर लेते हैं विद सोशल इंटरेक्शन. तो ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इंट्रोवर्ट्स को वो इरिटेटिंग लगता है. And most of the time what happens with them is that it makes them feel irritated. So when someone talks non-stop, without allowing for anyone, any pause or breathing space, it can be like a marathon without a finish line. That isn't to say that introverts don't enjoy good conversation, but the key word here is conversation, a two-way exchange of thoughts and ideas. So one-way conversation जहाँ पे एक इंसान अपनी सारी बातें कर रहे हैं and not listening to the other person or not allowing others to say a word. The constant talker doesn't leave room for this exchange, turning what could be an enjoyable interaction into a one-side monologue. So these situations are very draining for introverts. The introverted twins. एक इंट्रोवर्ट को एक दूसरे इंट्रोवर्ट के साथ मोस्टली पीपल थिंक कि ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है. सरप्राइजिंगली अनदर इंट्रोवर्ट्स कैन समटाइम्स बी अ सोर्स ऑफ ड्रेन फॉर इंट्रोवर्ट्स. ऐसे लोग जो खुद इंट्रोवर्ट है और वो जब गेट अलॉन्ग विद अनदर इंट्रोवर्ट तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन हो जाता है. सो व्हाइल यू माइट थिंक दैट टू इंट्रोवर्ट्स वुड नेचुरली गेट अलॉन्ग, इट इज़न्ट ऑलवेज द केस. Two highly introverted individuals can occasionally find themselves in a stalemate of silence. जब दोनों introvert है, they won't say a word. They will wait for each other कि कोई एक बोलेगा तो दूसरा बोलेगा. But what happens with is that कि ये draining situation हो जाता है because no one is saying and everyone जो भी दो लोग हैं they are thinking to say something but they aren't saying anything at all. तो ये situation draining situation बन जाता है for two introverts. When both parties are protective of their personal space and time, it might lead to a lack of interaction and shared experiences. This can strain the situation or it can make feels it's not good for two introverts to get along with just because they can't share each other thoughts in that comfortable level because both will gonna be like waiting for each other to say something. Over enthusiast. So you might have heard some people around. Ever been around someone whose energy level always seem to be at a high? Means they are like always happy, always they're the ones bouncing around the room, talking loudly, generally radiating an intense level of excitement about everything. This is the over enthusiast. While their zeal for life can be infectious, for introverts, it can be overwhelming. ऐसे लोग जो ओवरली हैप्पी रहते हैं हर वक्त, इंथुजियास्ट, तो ऐसे लोग भी ड्रेनिंग होते हैं फॉर इंट्रोवर्ट्स. इट्स लाइक बीइंग इन अ रूम, इंट्रोवर्ट्स के लिए बीइंग इन अ रूम विथ लाइव वायर दैट कॉन्स्टेंटली स्पार्किंग. तो उनके लिए ऐसे सिचुएशन हो जाता है जैसे कोई लाइव वायर है एंड वो स्पार्क कर रहा है कॉन्स्टेंटली. तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये होता है ना कि इंट्रोवर्ट का ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेशली एक न्यूरोट्रांसमीटर को जिसको डोपामिन कहते हैं. और ये डोपामिन जब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिलने लगता है इंट्रोवर्ट को, दे कैन क्विकली बिकम ओवरवेलमिंग. उनके लिए सिचुएशन ओवरवेलमिंग हो जाता है, जस्ट लाइक ड्रॉनिंग. जैसे द ओवर एंथुजियास्ट विद देयर हाई एनर्जी एंड कॉन्स्टेंट एक्टिविटी कैन अनविटिंगली फ्लड the introverts with too much stimulation. तो ऐसे enthusiastic लोग stimulation इतने सारे देते हैं जिससे overwhelm हो जाता है introverts, and this can be overwhelming situation for introverts. तो introvert का दिमाग already sensitive है for dopamine and वो extra stimulation नहीं ले सकते. So understanding this dynamic can help introverts set boundaries and manage interaction with these high energy individuals in a way that's less draining. The warrior. We all have that one person in our life जो बहुत ज़्यादा
टेंशन लेते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एंशियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कुछ सोच से कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, दिस इज़ द वॉरियर। तो while it's completely normal to worry, but being around a constant warrior can be mentally exhausting for an introverts. But ज़्यादा चिंता करने वाले लोगों के साथ when introverts live with them, तो ये उनके लिए ड्रेनिंग सिचुएशन हो जाता है। The social butterfly. Most of us know कि who seems to know everyone. ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो सबको जानते हैं, सोशल बटरफ्लाई होते हैं। तो they always at the center of every social gathering, effortlessly moving from one conversation to the next. This is social butterfly. While their social ease can be admirable, but introverts के लिए ये कुछ exhausting होता है। तो वो non-stop socializing, वो small talk being on all the time can feel daunting for them. For introverts को शॉर्ट कन्वर्सेशन करना नहीं पसंद है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डीप कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल, और इस वजह से दे डोंट लाइक दिस सोशल बटरफ्लाई पीपल्स। द डिबेटर, तो ऐसे लोग जो डिबेट करते रहते हैं हर वक्त बहस, दे ऑलवेज हैव अ पॉइंट टू प्रूव एंड एवरी कन्वर्सेशन फील्स लाइक अ बैटल ऑफ विट्स। दिस इज द डिबेटर। तो डिबेटर इज़ लाइक कि दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट ऑल द टाइम, एंड ऐसे ही लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग होते हैं इंट्रोवर्ट्स के लिए। द ड्रामा मैग्नेट, तो life is full of ups and downs, but for some people it seems like they are just stuck on a never-ending roller coaster of drama. So they always have a crisis, a feud, or some forms of chaos going on in their lives. This is the drama magnet. While it's important to be there for friends during tough times, continuing being pulled into someone else's drama can be exhausting, especially for introverts. जो ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ सिचुएशन बनाते रहते हैं, जस्ट लाइक overly doing something, overly explaining something, overly proving something, और हर चीज़ में they add up the drama. तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट के लिए ड्रेनिंग होते हैं। It's not your job to constantly observe others' drama or fix their problems. तो आप अगर ऐसे लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं जो ड्रामा, whatever the lives they are having, but they are telling it to you, all the dramas of their life, and ये introvert के लिए काफ़ी ज़्यादा draining हो जाता है। The energy vampire. Last but definitely not least. So they are the one, like I'm talking about the energy vampires. वो लोग ऐसे होते हैं जो when you have any conversation with them, you feel drained after that. So exhausted feel होगा, you feel so bad after interacting with them. तो energy vampires बुरे लोग नहीं होते हैं. They might be dealing with their own struggles and insecurities, but the tendency to dominate conversation, disregarded boundaries, or constantly demand attention can take a heavy toll on an introvert mental energy. So most important thing to remember here is that it's okay to prioritize your own well-being. It's okay to set boundaries and limit your interaction with people who drain you. After all, you can't pour from an empty cup. So understanding these 8 types of personality can help us introvert navigate our social interaction more effectively and protect our precious energy reserves. So ऐसे 8 तरीके की जो लोग हैं जो इंट्रोवर्ट के लिए काफ़ी ड्रेनिंग होती है. सो इंट्रोवर्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कि वो किससे बात करना चाहते हैं और किससे बात नहीं करना चाहते, सो दैट दे कैन प्रिजर्व देयर प्रीशियस एनर्जी.